कोई भी ऐसा क्रिकेटर नहीं है जिसने आज तक टेप बॉल या सॉफ्ट बॉल क्रिकेट ना खेली हो. So, for that reason, we bring CEC to our show and discuss tape ball and softball cricket. Welcome to the show, Hamza bhai. Thank you for having me. Yeah, so पहली बात तो मुझे ये बताएं, why CEC and where did this journey begin? So it all started last year. We used to do events for different organizations, indoor cricket, whatnot, right? So there were a couple of us who were volunteering, and then we were like, we were doing it for other people, and they're not listening to us on how we can make it better. Why not start our own thing? सही. So at least we can do it properly, where the organizers are happy, volunteers are happy, and the players are happy, right? So that's how it started. And then in basically Hurraza, he's the other part of CEC, Okay. along with a lot of other people that I want to name, because unki contribution is uske bagar CEC hai nahi. सही. There's Usman Khan, there's Hamid, there's Shahryar, there's Naeem Bhai, there's Shahrukh that you know, there's Umar, not the one you're thinking of, a सही. different Umar, right? There's a lot of people that are involved. I'm missing a lot of names right now, but Shoaib Bhai hai, Zain Arshad from Kinetic, he was instrumental in helping us start this. So there's a lot of people that volunteered their time when we started. और ये CEC उनकी वजह से ही है. They don't get the recognition, they don't see the limelight, but they are the backbone of CEC, because there's nobody else other than this group of people सही. that are involved. So what had happened was we wanted to do a tournament last year in October. So we got Umar Sheikh on board, who sponsors basically everything CEC. He's not an executive of CEC like a lot of people think, but he is our main sponsor. सही. And the reason he is the main sponsor is because हमें कोई और वो sponsor लेने का मौका ही नहीं देते. We tell him we're doing an event, he's like, okay, done. कब कर रहे हो? सही. So here's the money, go do it. Right? And then he's also fond of cricket himself. He plays cricket with us too. तो वो भी help हो जाती है. There's a bond there too. But on the business side, he understands how we promote all the sponsors. I also want to name Asif Bhai from ANV Autos. He's instrumental. उनका भी यही scene है, same Umar Bhai वाला scene है. You give him a call, he's like, कितने चाहिए? And then you're like, and उनको पता है कि exposure मिल रहा है. He understands that. So he's happy with that too. So it's a two-way street. So basically, we wanted to do an event, outdoor event. So we booked a ground. And then we're like, अच्छा ground तो book कर लिए, इसका poster पे नाम क्या लिखें? Who's doing this? So I was just driving to work one day, and then I came up with this name, CEC, which stands for Cricket Enthusiasts of Calgary, because it's all out of enthusiasm for cricket. There's nothing else to it. We're not making money. A lot of people think that there's a lot of money involved in this and we're making money, but there's zero money involved. In profit sense, there's no profit coming in. हमारे लग ही रहे होते हैं. या क्योंकि जब आप इस तरह की चीजें करते हो, उसकी कॉस्ट है, अपने उसमें रन करना है, उसमें फूड भी आएगा, उसमें आपने प्लेयर्स को भी यूज रखना है, इक्विपमेंट भी हो रहा है, सारा कुछ है. सो the biggest cost is the venue grounds. वो पहले ही कम है कैलगरी में. Right. So if you're doing it in winter, उसका indoor तो insanely costly, right? तो उधर फिर sponsor money comes in very handy, but even then you're running behind because you don't want to milk all the sponsors for one event. You want to spread it to different events. Right. So वो भी challenges हैं. So anyways, that's how CEC started. We did that outdoor event, 2-day event. And then it was a success. Everybody was happy. We were happy. We had fun doing it. We didn't play in it, but we had fun doing it. So that's how CEC started. And then I spoke with Zain Bhai from Kinetic Sports, Zain Arshad.
his name comes up in everything cricket, right? Everything So cricket. So that's in cricket. yeah. So he and his friend used to do JJ Indoor League every year in November. We spoke to him. We're like, "Are you guys doing this league?" He's like, "Nahi yaar, Yasir moved out to Yukon, I think. So I'm not thinking of doing it this year because I don't have the people to support me or to help me organize this." So I was like, "I'm not doing anything in November. I have a couple of guys who are not doing anything either. So why don't we do this together?" Say. So he's like, "Okay." So we had a meeting and then we came on board together. We named it Winter Cricket League. It went on for 8 or 9 weeks, I think. Okay. It started in November, ended in December, sometime whatever or October, I think it started. Last year? It happened indoor. We had 10 teams, I think 10 or 12 teams. I'm forgetting, but we had in total 75 matches. Wow. The prize money was around $4,000 or $5,000, and we used to play 8 p.m. to 3 a.m., 2 a.m. every Saturday. That's at Coyotes? Coyotes Den. And there were like everybody, जिनका आप सोच सकते हो कि टेबल में नाम है, they were there. So it was not like कि चार बंदे इधर से उठ के आ गए, चार बंदे उधर से उठ के आ गए. Because there was a lot of prize money, right? So everybody wanted to be part of that, and they came, and then it was a success because we had a good feedback from everybody. Same. Basically, players, organizers, volunteers, sponsors, everybody was happy. So that was the real moment when we realized, okay, we can do something with CEC in terms of organizing stuff. क्योंकि ज़्यादातर मसला ऑर्गेनाइज करने में ये होता है कि पीपल डोंट ट्रस्ट यू कि ये कहाँ से लोग आ गए हैं, राइट? ये पता नहीं क्या करेंगे, पैसे लेके ना भाग जाएं, एंट्री फीस लेके ना भाग जाएं, ऑल दैट. बट वंस यू डू ऑल दोज इवेंट्स, दे नो दे आर डूइंग इट प्रॉपरली, राइट? तो वो उसका ट्रस्ट आ गया एक दफ़ा, तो देन वो इट वाज जस्ट. And as you're saying, the money is being spent on the tournament. So whether it's venue booking, equipment, everything is provided. Food, refreshment, everything is there. Yes. So the players, उनको एक environment जब मिल रहा है, so why would they not want to come back? Yeah. Right? So end of the day, environment की तो बात है. 100%. और यही there's a lot of organizations that do this. And there's I don't want to name anybody, but there's a lot of organizations that actually don't do that. They think, okay, we'll make money from this and then use it somewhere else. We don't provide refreshments or whatnot, तो वो $100 बचा लो and we'll spend it later on the next. But that's not how we roll. I think हमने सारा कुछ expenses करने के बाद we had $100 left over. And then we were thinking कि हम इसका क्या करें अब, right? Because we don't want to take it home. अच्छा, फिर उस $100 का आपने क्या? उस $100 का हमने डबल विकेट टूर्नामेंट करवाया. Legit हमने and we reached out to उमर भाई और like के $100 हमारे पास है, बाकी चाहिए. तो he's like, okay, and I'll tell you a funny story. तो हमने सिर्फ उमर भाई को अप्रोच किया because it was just a one day thing. हमने डबल विकेट टूर्नामेंट करवाया. सही. In Genesis is expensive, right? It's $150 for an hour. तो हमें वो डेट्स मिली, हमने कहा ओके विल डू दिस. तो हमने टीम्स $30 $40 एंट्री फीस पकड़ी टू कवर द रेस्ट ऑफ इट. तो हम करवा रहे हैं एंड देन वी हैड नो मनी फॉर रिफ्रेशमेंट्स. बट आसिफ भाई केम टू सी कि क्या हो रहा है. ही इज अ वेरी फन लविंग गाय. तो ही इज सिटिंग देयर. So he's like, you know what? I'm gonna go grab refreshments for everybody, and it's from me. So he went out and he grabbed like 100 samosas, drinks for everybody, and we're like, okay, perfect. हमने अप्रोच भी नहीं किया और बंदे ने आगे खुद ही सारा कुछ कर दिया, right? तो वो एक ट्रस्ट लेवल बिल्ड हुआ हुआ. So that's why we didn't approach him to sponsor this, but he was there, so he saw it. He's like, okay, I'll do this. Same. Right? Because he knows that money is not. इन लोगों ने इसलिए नहीं किया कि इनके पास होंगे नहीं. अगर होते तो ये लोग कर लेते. So that's where all the money goes. और उसके बाद छोटी मोटी चीज़ों पे अपने पैसे लग जाते हैं. That doesn't really matter, right? Because मेरा personally, and I know everybody else that's in that group, कि we enjoy everybody else's company.
we want to have good time. That's the whole purpose of playing cricket. We don't want to earn money from it. वो अल्लाह ने देना, वो there's other resources अल्लाह दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल right? तो दोस्तों के साथ अब जैसे पाकिस्तान में रमज़ान क्रिकेट होती है, जी। आप सारी रात बैठ के क्रिकेट खेल रहे हो, गप लगा रहे हो, वो we were missing that. तो we're like, okay, ये शुगल ही सही, every Saturday sit down for 6, 7, 8 hours, play cricket, have fun, or what's better than having 200 people there? एग्जैक्टली। और दूसरा ये है कि आप बुरी चीज़ों में नहीं जाते, Exactly. Yeah. राइट? सो इज दिस कम्युनिटी ओनली ओपन टू पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटी के ये सबके लिए ओपन है? It's open to everybody. There's a lot of Indians in there. We had, I think, 3 or 4 Indian teams in that tournament. ओके। There's two Bangladeshi teams, and जो बाकी टीमें भी हैं, there's a mixture of everybody. Even in our hardball team, we have a lot of Indians. It's not restricted to anybody or one group. Anybody can be part of it. अगर आप CEC में जाके देखें, आप नाम देखें, तो उसमें 4 नाम इंडियंस होंगे, 4 पाकिस्तानी होंगे, 4 बांग्लादेशी होंगे. ओके। तो and they come back because we're not like कि हम पाकिस्तानी हैं तो we're gonna start fighting with Indians, right? Or we're Muslim, so we don't want any Hindus or Sikhs in our team. That's not how we roll. Yeah. And as a person, I don't roll like that either. So I would never allow that in the group either. Yeah, inclusivity hasn't been that big of an issue in Calgary, लेकिन there are some teams जिनमें है थोड़ा बहुत. Yes, yeah. So that's why I just brought that up, Yeah. because जो लोग देख रहे हैं, अगर वो आपके ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनकी अगर हेजिटेशन है कोई, वो दूर हो जाए पहले Yeah, ही. yeah. That was the main reason. You're in that group, you see how many Yes. people message in that group, और वो कोई उसमें वो नहीं हो रहा होता है. It's all about cricket or having fun या banter basically, Exactly. right? उसके अंदर कोई politics की बात नहीं हो रहा होता है, और कोई और. And good thing is हमें कभी वो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी कि don't do this. Moderation नहीं, Moderation जरूरत ही ना पड़ी, जरूरत तो नहीं why do it for the sake of it? और ये सारों का ग्रुप है. If somebody messages me कि यार मैंने इस बंदे को ग्रुप में डालना है, it's open, you can add it yourself, right? You don't even need admin की permission. Because सही. वो ग्रुप इसीलिए है कि सारे communicate कर सकें. There's no other reason. It's not Community, monetized, one right? community. Exactly. सही. तो अभी आप मुझे बताएं कि कम्युनिटी हाउ, आई नो यू सेड कि लास्ट ईयर स्टार्ट हुई, अभी आपके पास कितने मेंबर्स हैं और आगे क्या सोच रहे हैं, अभी क्रिकेट किधर जा रही है? So when we started this, इसका सिर्फ बनाने का रीज़न ये था कि एक जगह कम्युनिटी, एज यू सेड, कम्युनिटी आ जाए ताकि कम्युनिकेशन में हेल्प हो. तो देयर्स नो एम्बिशन कि इसको हमने 1000 बंदा डालना है इसमें या हमारा 5000 बंदा होता है. दैट्स नॉट द एम्बिशन. बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि इफ आई स्टार्ट कॉलिंग पीपल अप और आस्क यू के अपने दोस्तों को भी डाल दें, never asked anybody to do that, right? क्योंकि वो नंबर बढ़ा के हमने क्या करना है? We don't gain anything from it. Exactly. अगर किसी ने क्रिकेट खेलनी है, then they are welcome to join. अगर किसी ने नहीं क्रिकेट खेलनी, they are welcome to join and enjoy the banter. Exactly. That's as simple as that. अभी ये I think there's around 180 people in there, and that's all organic. उसमें से मैंने शुरू में अपने जो दोस्त डाले, उसके बाद जितने आए वो सारे आपने बोला कि यार मेरा दोस्त खेलना चाह रहा है, आपने ऐड कर दिया बंदा. That's how it happened. और उसके थ्रू there's a lot of people. अभी हमारा जो करंट हम सेशंस करवा रहे हैं उसके अंदर सारे दोस्त ही बन गए हुए हैं, और उसमें अंदर एक जो बंदा आता है वो फिर दोबारा लाजमी आता है, बिकॉज we're having so much fun. और उसके अंदर ये नहीं हम सारों को इक्वली ना डिस्क्रिमिनेट कर रहे होते सारों के अगेंस्ट. तो इक्वली डिस्क्रिमिनेट कर रहे होते हैं. दैट्स अ बेटर वे. वो क्योंकि वो बैंटर, अब आपने क्रिकेट सिर्फ ये तो नहीं ना कि चुप करके आप क्रिकेट खेल रहे हो. सही. तो वो जो बैंटर, हाँ, उसमें तो है ही वो छुप के, और या छुप के आप नहीं खेल सकते. तो ये भी नहीं है कि इट्स अ क्लोज्ड ग्रुप के जहाँ पे 5-6 बंदे क्रिकेट खेल रहे हैं तो बाकी जो लोग आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि यार मुझे कोई मुंह नहीं लगा रहा. सही. दैट्स नॉट हाउ इट इज. जो आता है उनको हम सारों को ही रगड़ देते हैं फिर. तो क्योंकि हम एक दूसरे को रगड़ रहे होते हैं तो हम कहते हैं लेफ्ट आउट ना फील करे, रगड़ दो इसको भी. तो वो भी इंजॉय करते हैं बिकॉज वो ट्रीटिंग देम एज आवर फ्रेंड्स, राइट? हाँ जी. तो क्योंकि किसी ग्रुप में एंटर हो के बंदा लेफ्ट आउट फील करता है कि यार ये पता नहीं मेरे टाइप के बंदे हैं नहीं. हाँ जी. रगड़ने से मुझे ये बात याद आई एक्चुअली, जब क्रिक चैट स्टार्ट हुई थी, तो आई थिंक यू वर वन ऑफ द फर्स्ट वंस who reached out to me and said, hey, you know what, this is my feedback, आप इस चीज़ को ऐसे ऐसे करें.
तो आई एम श्योर आपने थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट भी देखी होगी ओवर टाइम. Yes. सो आई वांट टू थैंक यू पर्सनली फॉर गिविंग योर फीडबैक to improve the show and No, you're doing a great job. और मैंने देखा है from the very start because it came across, the first episode came across and I saw it. I'm like, I enjoyed the talk. लेकिन उसके अंदर ये कुछ मसले हैं तो right I thought about messaging you. And I'm like कि बंदा पता नहीं क्या बोलेगा right आगे से, right? So I didn't message you. And then the second episode happened and there was, I think, कोई बात हो रही थी. I don't even remember who the guest was. But you asked him something and he gave you the answer and I wanted to know the answer. But मुझे वो आवाज़ नहीं आई. So that's when I idea reached out. I was like, okay, I need to tell him. क्योंकि right if he's trying so hard to do it. और मैंने पहले सोचा कि एक एपिसोड होगा तो then he's done. he's done yeah But then you were consistently doing it. तो I'm like कि okay बंदा कर रहा है तो उसको बताना चाहिए. right Maybe he doesn't realize this. So that's why I reached out to you and then उसके बाद हमारी I think next day accidentally मुलाकात भी हो गई. exactly And we were just standing there and I didn't know it was you and you didn't know it was me and then that's how it started. लेकिन आपने तो बहुत improve किया. thank you The quality has improved, the conversation has improved. So kudos to you for doing it and sticking Thank with you. it. I think it's also I do want to give full credit to the guests जो बिलीव करते हैं इस चीज़ में क्योंकि एंड ऑफ द डे ये जो प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया है इसका कोई फाइनेंशियल गेन के लिए नहीं स्टार्ट किया है. दिस इज़ टू हाईलाइट लोकल क्रिकेट what's happening in Calgary, Edmonton, and few other cities. Yeah. Even Toronto, we'll see how things go this year. But this is not $1 million project. Yeah. This is to highlight talent and how can we showcase our local talent Yeah. and beyond, right? So the vision hasn't diverted. Negative चीजें भी हुई हैं हमारी cricket in Calgary Yes. and even beyond. तो उस चीज को भी हम अगर हमारी कोई low light है या अगर कोई हमारी चीज में किसी चीज में problem है, we are gonna highlight those. We're gonna see okay इसके ऊपर action लिया जाए. So that will never change. Negative or positive, cricket की बात होती रहेगी. हमारा गोल एक ही है कि क्रिकेट को आगे कैसे बढ़ाना. Yeah. So CricChat will continue to do that. And we cannot do that without our sponsor of the show. CricChat is obviously powered by Umar Sheikh, and Kinetic Sports also help us out a lot. So we do want to thank them both. And we are also thankful to our guests who are, very eager to be on part of the show. Yeah. I've gotten a couple of teams who reached out to me and said, "Hey, when is my captain or when is my teammate is going to be on the show?" So there's a couple of other clubs who will start to come as well. So ये जो show बनाया हमने ये सिर्फ elite division के लिए नहीं बनाया. So we're going to cover softball cricket, we're going to cover hardball cricket, we're going to cover different divisions from different leagues. So it's not just one particular league that we're covering. And there's no censorship. So this platform was very much needed. So I'm glad you started this and like you said, you're not only going to cover tape ball or CDCL, you're going to cover cricket in Calgary. Cricket in Calgary. So it was very, very much needed and I'm glad you're sticking with it. Yeah. No. There's a Facebook group, CC ka Facebook page bhi hai. And basically, but it's mostly on WhatsApp. I can provide that QR code or that link to We'll you. put it Yeah. up there. Players itself, unka jo passion hai, that drives your sponsors and the group itself. Yeah. Can we talk about some of those players? तो क्रिकेट बेसिकली कैलगरी में whoever wants to play cricket उनको सिर्फ अपॉर्चुनिटी की कमी है, टैलेंट की कमी नहीं है, बंदों की कमी नहीं है. There's other sports जिसके अंदर we've organized other sports too, जिसके अंदर आपको बंदे पकड़ के लाने पड़ते हैं because you can't even get 20 people to play. क्रिकेट के अंदर you just post क्रिकेट हो रही है, 100 people will show up, right? क्योंकि सारों ने बचपन से खेली हुई है. The roadblock in that is कि everybody thinks if I go, I don't know how good I am. और आगे से बंदे पता नहीं कितने प्लेयर होंगे तो मेरी पता नहीं टीम में जगह बनेगी कि नहीं बनेगी. Which is an issue that comes up every now and then when we're organizing any event. So हमने जो पहला इवेंट किया था अक्टूबर में जिससे CEC basically the very first event, उसके अंदर we told all the teams were like okay, here's a list of players that we would appreciate if you don't include in your teams, right? Those are the big names of Calgary tape ball, Okay. right?
और हमने उनको नाम दिए कि वी थिंक दीज गाइज हैव बीन परफॉर्मिंग अमेजिंगली. इट्स नॉट फेयर टू देम बट दे प्ले सो मच क्रिकेट कि अगर वो एक टूर्नामेंट मिस करवा देंगे ना तो इट्स फाइन, राइट. हमें उन लोगों को चांस देना है जो साइड लाइन पे बैठ के सिर्फ देख रहे होते हैं. मेक सेंस. दे वाना प्ले, लेकिन वो कैसे टीम को जाके कहेंगे कि भाई इस बंदे को निकालो जिसने सेंचुरी मारी हुई है या जो 5 बॉलों पे 4 छक्के मार देता तैमूर मिर्जा. है, तैमूर मिर्जा टाइप. या तो वो जो साइड लाइन पे बैठे हैं हमने उनको, दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. सही. और इस ग्रुप में ज्यादातर वही लोग हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ गुड प्लेयर्स इन देयर टू, जो सारे बड़े नाम हैं. दैट्स दे केम फ्रॉम WCL बिकॉज WCL वाज सीरियस क्रिकेट, इवन दो इट वाज इंडोर कायोटी डैन और नॉट. बट इतना आसान नहीं है व्हेन यू आर प्लेइंग कंपेटिटिव क्रिकेट जिसमें मनी इन्वॉल्व है, प्राइज मनी इन्वॉल्व है. तो इट्स नॉट दैट इजी कि आप शो अप करो एंड इट्स इंडोर तो आप ये करोगे तो छक्का हो जाएगा. इट्स बिल्कुल नॉट बिल्कुल दैट इजी. द बिल्कुल. प्रेशर इज इमेंस और majority of the players crack under pressure. मेरे ख्याल से प्रेशर, स्पीकिंग ऑफ दैट, टेप बॉल में समटाइम्स ज़्यादा हो जाता है हाँ क्योंकि उसमें गेम ज़्यादा क्लोजर होती हैं. हाँ आपके पास अपॉर्चुनिटी कम है. आप एक एक बॉल से आपकी पूरी या गेम चेंज होगी क्योंकि या आपके ओवर्स बहुत लिमिटेड हैं. दूसरा, इंडोर में अगर आप करवा रहे हो ना तो क्लोज स्पेस है, तो उसमें जो शोर हो रहा होता है ना, दैट गेट्स टू यू. यस. इफ यूर You're मैंने in मुझे the face. हाँ, मुझे एक बैट्समैन ने बताया इज़ अ गुड प्लेयर, रियली गुड प्लेयर आउटडोर का. तो वो कहता कि यार मैं तो मेरी आंखों के आगे तो अंधेरा आ गया था. मतलब बॉलर वाज अबाउट टू बॉल. मैंने कहा क्यों? कहता शोर इतना था, माय माइंड वाज ऑल ओवर द प्लेस, आई डिडंट नो व्हाट आई वाज डूइंग. तो आई वाज लाइक ओ वाह. तो हार्ड बॉल में ये चीज़ कंप्लीटली अलाउ नहीं है ना, इस हाँ वजह से, या क्योंकि जब बॉलर आ रहा है तो कोई भी शोर नहीं कोई होता. शोर नहीं है. फिर उसके अलावा आप मतलब कि हार्ड बॉल में ग्राउंड भी तो बड़ा है ना, हम्म. आपको उसकी आवाज़ भी नहीं आएगी जो बाहर से बोल रहा है. हम्म. इधर तो बिल्कुल ही आप पीछे बैठे हुए हैं एंड देन यूर टॉकिंग और सारा बैंटर भी चल रहा है. बिल्कुल तो बिल्कुल. वो फिर सम पीपल दे वो क्रैक कर जाते हैं अंडर. हम्म. लेकिन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जो सीरियस प्लेयर्स नहीं हैं उनके लिए ये जगह ज़्यादा सूटेबल है. सीरियस प्लेयर्स वो उनको तो टूर्नामेंट्स मिल जाते हैं. राइट. टूर्नामेंट एडमिंटन में होते हैं, CSL यूज टू हैपन, तो वो टूर्नामेंट उनको मिल जाते हैं. दे प्ले इनफ क्रिकेट. तो जो हम ओपन टूर्नामेंट करवाते हैं उसके अंदर जो मर्जी बंदा आके खेले, जैसे मर्जी खेले. अगर टूर्नामेंट नहीं है तो देयर इज वीकली सेशंस विद दैट वी डू. वी यूज टू डू इट इंडोर व्हेन इट वाज विंटर. अभी समर में हम एवरी सैटरडे 6 to 9, 7 to 9 every Saturday we're doing it. ओके. We do it in Riverbend. क्योंकि हम कहते हैं कि अगर बंदे ने टाइम निकाल के अपना लिस्ट में नाम डाला हुआ है एंड इट्स ओपन लिस्ट, ये नहीं है कि मेरा अपने 4 दोस्तों के, आई डोंट इवन अलाउ दैट. हमारे ग्रुप में से कोई भी नहीं अलाउ करता. इवन मैंने भी अगर खेलनी हो तो ऐसे नहीं है कि अगर लिस्ट स्टार्ट हुई है तो मैं कह दूं कि यार मेरा भी नाम डाल देना. दैट्स नॉट इवन अलाउड. राइट. तो अगर आपने खेलना, यू हैव टू एंटर योर नेम योरसेल्फ, ताकि सारों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले. एग्जैक्टली. और ये नहीं है कि 4 बंदों का 5 बंदों का ग्रुप है तो वो आगे एक बंदा सारों के नाम डाल रहा है और बाकी कह रहे हैं कि यार मेरी बारी नहीं आई. तो अगर आपने खेलना है, और विंटर में तो ये होता रहा है कि आई यूज टू स्टार्ट द लिस्ट वेंसडे 12 PM. एवरीबडी न्यू दिस के लिस्ट स्टार्ट होनी है वेंसडे, मैं पोस्ट कर देता था और वो विद इन 3 मिनट्स लिस्ट फुल हो जाती थी. वो. एंड देन आई यूज टू गेट मैसेजेस कि यार मैंने तो अलार्म भी लगाया हुआ था और मेरा नाम नहीं आया, मुझे मौका ही नहीं मिला. कई लोग तो मैसेज टाइप करके रखते थे, वो सेंड का भी नहीं था मौका मिलता. तो वो इसीलिए था कि मैंने अगर 14 15 लोगों के साथ खेलना है, आई कैन एंटर दोज नेम्स, लेकिन फिर ग्रुप बनाने का क्या फ़ायदा? क्या फायदा? क्या फ़ायदा? वही 14 लोग खेलते रहे, वो चुप करके आपस में खेलते रहे, तो इतना पब्लिक ग्रुप बनाने का क्या फ़ायदा? एग्जैक्टली. तो सारों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. उसमें अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड भी आउट हो रहा है तो हो रहा है, या. ही कैन जॉइन द नेक्स्ट सेशन. उसको पता है कि इस तरह ही चलेगा क्योंकि इट्स ऑल इन पब्लिक आई. तो मैं उसको हाइड भी नहीं कर सकता और मुझे वो बड़े मैसेजेस भी आते हैं फिर कि आपने उसको क्यों ऐड किया है उसको. जो मैंने कहा वो अब नहीं होगा. अच्छा, हार्ड बॉल में तो पॉलिटिक्स होती ही होती जी. है, आपको पता ही है. टेप बॉल में पॉलिटिक्स किस किस्म की है? टेप बॉल में इंटरनल पॉलिटिक्स ही है ऑर्गेनाइजेशंस में. अदर देन दैट कोई वो राइवलरी उस सॉर्ट की नहीं है कि वी स्टार्ट फाइटिंग विद समबडी एल्स हु इज डूइंग एन इवेंट. वी आर ऑल फ्रेंड्स. ठीक है, वो भी हमारे टूर्नामेंट्स में खेल रहे हैं. FC डज अ टूर्नामेंट, CSS डज अ टूर्नामेंट.
उसके अलावा CSL यूज्ड टू डू अ टूर्नामेंट. उनका लास्ट ईयर कोई वो इशू हो गया था, उसकी वजह से आई थिंक दे डिसबैंडेड, बट आई थिंक दे आर गोना कंटिन्यू सेपरेटली. तो that was unfortunate. I was there because CSL, they're basically the pioneers of indoor cricket league, and they've been doing it for 4, 5, 6 years. I don't know. सही. Right. तो उनका वो जब इशू हुआ, was there and it was sad to see. लेकिन वही आपस में अगर आप 4 वॉलंटियर्स की लड़ाई हो जाए तो हो जाए, और अगर 4 वॉलंटियर्स में से किसी को ज़्यादा शौक है कि मेरा नाम आए कि हमजा प्रेजेंट्स और समीर प्रेजेंट्स, तो उसमें तू मैं अदर देन दैट देयर इज नथिंग. There's nothing. देयर इज Yes. नो पॉलिटिक्स, क्योंकि उसमें आप पैसा इन्वॉल्व नहीं ना है इतना. आपका अगर आपने ऑर्गेनाइज करना है कुछ तो उसमें आपका पैसा लगेगा. इफ Right. यू वाना बी द लीड Naturally. सिंगर ऑफ द बैंड, आपका पैसा लगेगा, पैसा आएगा नहीं. क्रिक चेयर ने मुझे ये चीज़ सिखाई है. Just messing with you. But yes, मैं ना actually किसी से बात कर रहा था in Edmonton. Uh, I think they run BHL or something along those lines. There's a group. They reached out to me and they said they have their external challenges. They can't really seem to book up outdoor facility. Okay, वो hardball जो leagues हैं वो उन्होंने सारा कुछ बुक किया Yeah. होता है पहले से ही. So they were like, how do we? They were asking for an advice कि भाई हम कैसे हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सके, क्योंकि हमारी टेबल लीग यहाँ पे आगे बढ़ रही है, but we are seeing so many roadblocks. यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है? Exact same thing. The last double wicket tournament we did was in January, and people are reaching out to me, when is the next tournament? And these are teams that play a lot of cricket, but they say, okay, we want more tournaments. Can you organize one? I'm like, find me a ground and I'll do it. I'll do the hard part of volunteering and whatnot. You guys find me a ground. There's no grounds out there. Winter में आपके पास वैसे नहीं आप बाहर खेल सकते. इंडोर का इट्स एक्सपेंसिव, नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट, राइट. अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपने टूर्नामेंट करवाना, 10 2 डे टूर्नामेंट जिसके अंदर 6 टीमें होंगी और वो आपको $150 एन आवर, तो आप हिसाब लगा लेंगे, आप 6 घंटे की भी रोज़ के बुक करें तो एड्स अप. और उसके बाद फिर आप टीम से कह रहे हैं कि गिव मी $500 एंट्री फी, जिसके अंदर इंडोर में 8 लोग हैं, 7 लोग हैं. सो दैट्स अ हेफ्टी अमाउंट. राइट. आउटडोर में अगर आप करना चाहते हैं, देयर इज कपल ऑफ ग्राउंड्स दैट you can go and capture, but that's first come first serve, so you can't even book those. The rest of the grounds are booked by CDCL or IPL or CCCS, so those ones you don't have access to. And I guess rightly so, because CDCL has been in operation since who knows, 19. right, 19 or something. तो उनका बनता भी है. And then there's 170 or odd teams in CDCL and IPL and CCCS. तो और that's proper organized cricket जिसके अंदर you have your own uniforms and whatnot. तो उनको वो बनता है कि they have proper grounds. तो टेप बॉल फिर वो बैक सीट लेनी पड़ती है. राइट. बट डू यू थिंक देयर कुड बी अ रूम जहाँ पे ये सारे कुछ शेयर हो जाए, क्योंकि एंड ऑफ द डे पैशन जो है कुछ प्लेयर्स हैं, दे एब्सोल्युटली लव. फॉर एग्जांपल कामी भाई, कामरान हुसैन, ही इज लाइक आई नेवर प्ले टेबल. टेप बॉल, ठीक है ना. वो बंदा, ही इज वेरी पैशनेट अबाउट द गेम. Yeah. एंड देन जस्ट लाइक दैट देयर कुड बी अदर प्लेयर्स जो टेबल में बहुत ज़्यादा पैशनेट है, दे डोंट वांट टू टच हार्ड बॉल. डू यू थिंक कि कोई म्यूचुअली शेयर हो सकती है ये स्पेस के नहीं? Right now, I don't see it happening unless City decides something, और वो कोई grounds बनाने शुरू करें and give access to booking access to commoners, right? Because ये वाले grounds you can't even book. CDCL books them in advance. तो आप कैसे उसको access करोगे? There's only what 5 grounds, 6 grounds राइट. in total. तो अब अगर आपने 170 teams को schedule करना है, they need more grounds. अगर I guess अगर 4 ground और भी आ जाएं तो वो भी टेबल को नहीं मिलेंगे. 4 ग्राउंड और आएंगे तो 170 और टीमें आ जाएंगी. क्योंकि आपको तो पता है कि 3-4 साल पहले तक कितनी टीम्स थी, 70-80. विद इन 2-3 years ये सारा इतना एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गया. क्रिकेट बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है. लास्ट वीक हमारा एक सेशन था जिसमें पॉल न्यूहैम
he was on the show and he was talking about it. It's like, yes, cricket to grow हो रही है, but umpiring standard जो है वो नीचे जा ही जा रहा है. So that's something that we're going to struggle with even going forward. क्योंकि हमारा umpiring पे focus नहीं है, हमारा number of games पे बहुत ज़्यादा focus है. So what's your take on that? The reason for that is the umpires are volunteers, right? They get paid a little amount, but very little. वो इतना it's not worth it. जो जो umpiring करता है वो भी सिर्फ इसलिए कर रहा है कि उसको कोई शौक है. He has nothing better to do in the sense के घर भी मैं बैठ के टीवी देखूंगा तो I'll just go watch a match, right? तो वो चले जाते हैं देखने मैच and then that's how it happens. तो अब उनके लिए क्या मोटिवेशन है to go get level 1, level 2, level 3, लेकिन whatever it is. अंपायर, sorry to cut you off there, but अंपायर की अगर आप लाइफ देखें वो जलीली हो रहा होता है. हाँ जलीली हो रहा होता है. Right? So उसकी तो कोई लाइफ. Nobody's happy with them. Yeah, thankless job. ना पैसे ना कुछ. Volunteers ही हैं जैसे हम कर रहे हैं. क्रिक चैट वाली लाइफ है एक अंपायर की. CEC क्रिक चैट on the same page. Same, exact same. ऐसे मुझे वो याद आया अभी विंटर में हम every Friday or Saturday used to play, right? तो उसकी जो total cost आती थी I used to divide by total amount of players. Right. And I would like, okay, transfer this amount of money. सही. तो उस पे भी questions आने शुरू हो गए कि ये इतना ज़्यादा क्यों है? Why does it fluctuate? I'm like, look at the times. Sometimes we play for 2 hours, sometimes we play for 3 hours. So obviously it's going to fluctuate, right? और फिर then I tell them कि इसमें से कुछ मैं भी डाल रहा हूँ. Not because not everybody can afford $20 every week, right? Every week, because अब लोगों का क्या हालात है I don't know. Yeah, exactly. तो I wanna make it easy for everybody. तो उस पे भी questioning हो रही है. तो अंपायरिंग तो बिल्कुल ही वो थैंकलेस जॉब है ना, क्योंकि आपने वो देखी है मैचेस में कि ना बैटिंग टीम खुश है ना फील्डिंग टीम खुश है, उनसे पता नहीं अल्लाह भी खुश है कि नहीं है. You know? तो वो बेचारा जब अंपायर जा रहा होता है ना फील्ड जब छोड़ के जा रहा होता है, कुछ बंदे हैंडशेक नहीं कर रहे, कुछ बंदे हैंडशेक कर रहे हैं और लुक्स दे रहे हैं उसको. इट्स सच अ बैड एनवायरनमेंट फॉर द अंपायर. कुछ यू नो वी आल्सो टॉक्ड अबाउट बॉडी कैम एंड थिंग्स लाइक दैट कि जो अंपायर की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि देयर हैज बीन इवेंट्स इन द पास्ट, कैलगरी में हुए हैं, एडमिंटन में हुए हैं, कि भाई अंपायर को फिजिकली अटैक किया जाता है. दैट शुडंट बी पार्ट ऑफ द गेम. और मैंने काफ़ी दफ़ा, मैंने कैलगरी में नहीं बट काफ़ी दफ़ा मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा है कि भाई टेबल में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा है. व्हाट डू यू हैव टू से कि आपकी कम्युनिटी में ये चीज़ है कि नहीं? We haven't encountered anything like that. छोटे मोटे आर्गुमेंट्स हो जाते हैं अंपायर्स के साथ, बट वी मेक श्योर कि अंपायर वो हो who knows what he's doing. और अगर उसने गलत डिसीजन भी ले लिया है, उसकी इंटेंशन क्या है? अगर उसको लगा ही वो है तो हाउ कैन यू चेंज दैट? वो तो किसी भी आप लिंडार को भी लें तो वो भी गलत आउट दे सकता है, राइट? हाँ जी. अगर आप उसको इस बात पे क्वेश्चन करना शुरू कर दें कि तुमने गलत डिसीजन इसलिए लिया है कि तुम उस टीम के साथ मिले हुए हो या तुम उसके दोस्त हो, हैपन, तो फिर तो आप किसी को भी ले आएं तो फरिश्ता भी कोई ले आएं तो वो भी फिर आपको बुरा ही लगेगा. एग्जैक्टली. इंटेंशन वो अब सीसी का ये सीन हो गया हुआ है कि जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं उसके अंदर देर ऑल फ्रेंड्स. अंपायर्स आर फ्रेंड्स विद ऑल द प्लेयर्स. तो अगर कोई आर्गुमेंट होता भी है ना तो वो इस स्टेज पे नहीं जाता कि वो आपस में लड़ पड़े, बिकॉज वो समझ जाते हैं बात को. सम पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन फिर उनको कहना पड़ता है कि भाई इट इज़ व्हाट इट इज़, मूव ऑन. तो आपके भी हक में डिसीजन गए हैं, उनके भी हक में डिसीजन गए हैं, मूव ऑन. एट द एंड ऑफ द डे इट विल बैलेंस आउट. एग्जैक्टली. तो हमारा लेकिन होता है इस पे फोकस. WCL जो हमने विंटर क्रिकेट लीग करवाई थी उसके अंदर वी पेड द अंपायर्स, लेकिन उस पे भी लोगों को काफ़ी एतराज़ था कि ये न्यूट्रल नहीं है, ये इसने गलत डिसीजन दे दिया. मैंने कहा अगर दे रहा गलत डिसीजन तो आगे खुद अंपायरिंग करो, विल सी, राइट? जिसने आप CDCL में भी आपने ये देखा होगा क्वेश्चनिंग ज़्यादा, हेल्प करने कोई नहीं आता. हेल्प करने कोई नहीं आता. अभी रिसेंटली मुझे बताया गया था कि इंग्लैंड की पिच चेंज हो रही है. यस. And it will get changed soon, but number of volunteers are like zero. Yeah, right? Same thing happened with the Nets in Riley when Ake Bhai, who's the VP, he was trying to get some volunteers and he didn't get no response. Yeah, he mentioned that on the show when he was here on a couple of weeks ago. He mentioned it. I actually saw his message in the group, right? Yeah. And then I wasn't in town. So I saw it and then I was like, okay, let's see how many people reply. But no one he's replied. Right, nobody replied. मैं आपको एक funny चीज़ बताता हूँ. A couple of years ago, I
was umpiring one of the games at Inland Large. ठीक है, सही गर्मी, सूरज, मेरी टोपी घर रह गई हुई थी उस दिन, ग्लासेस मैंने पहनी हुई है. I was leg umpire at that over. मैं leg umpire था, ठीक है, उस ओवर में. And I sat down क्योंकि मैं, it was 40 over game या जो भी थी, yeah, it was a long game, hot day. Sat down. वो पीछे से मैंने बॉल हुई है, कीपर ने पकड़ा है, and I'm looking on the, let's say, parking lot की तरफ मैं देख रहा हूँ, उधर मैं कुछ देख रहा हूँ. वो जो बैट्समैन है, he just stepped out और कीपर ने मार दी. तो भाई मैं तो बाहर देख रहा हूँ. So he didn't give up. मैंने कहा भाई मैं आउट कैसे दूं, I didn't see ठीक it. है ना, आई डिडंट सी इट. अभी यही चीज अगर कुछ इस तरह की टेप बॉल में हो जाए तो उस दिन मुझे लग रहा था कि यार मुझे पढ़नी है, ना नहीं लेकिन वो नहीं हुआ. होता है कई दफ़ा. आई एम्पायर माई सेल्फ समटाइम्स टू टेप बॉल में. तो उसके अंदर जो नो बॉल का सीन है ना, ओवर स्टेपिंग नो बॉल का सीन, उसके अंदर समटाइम्स आई एम नॉट इवन लुकिंग. तो मेरा फोकस कहीं और है. देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग. वैसे भी ऑर्गेनाइजर हो तो आपका फोकस कहीं और Right. होता है. लेकिन ज़्यादातर लड़ाई नो बॉल पे होती है, विच इज़ ये कि फुल टॉस आ गई या Right. तो वेस्ट से नीचे थी ऊपर थी, उस पे ज़्यादातर होती है लड़ाई. Mhm. लेकिन अभी तक टेप बॉल में अल्लाह का शुक्र है हमारे टूर्नामेंट में ये नहीं हुआ कि किसी ने आगे कुछ ज़्यादा बोला भी हो. सही. थोड़ा सा आर्गुमेंट तो विच इज़ अलाउड. वो तो होता है, हाँ. क्रिकेट है, पैशन की गेम है, वो तो Exactly. होना है. हाँ. अच्छा मुझे अब ये बताएं कि नेक्स्ट टूर्नामेंट कब है? नेक्स्ट टूर्नामेंट इंशाल्लाह विल बी इन अक्टूबर. Mhm. ग्राउंड बुकड है हमारा कहाँ पे हो रहा है? मार्टिनडेल में. Okay. मार्टिनडेल क्रिकेट ग्राउंड. Is it a लास्ट 2-day tournament? मोस्ट प्रॉबली वी हैवंट वर्कड आउट कि हमने किस तरह इसको करना है. Mhm. अभी ये लॉजिस्टिक्स उसके डिस्कस नहीं हुए. इट्स सो फार आउट. So far out, और दूसरा हार्ड बॉल का सीजन भी अभी ऑन है. या एग्जैक्टली. तो वो टॉकिंग अबाउट इट, लेकिन अभी हमने उस पर कोई सच वर्किंग स्टार्ट नहीं की. तो बट दैट्स गोना बी द नेक्स्ट वन. उससे पहले भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि अगर हमें कोई जगह मिल जाए. इंडोर भी हम करवा सकते हैं क्योंकि ये वेदर परमिटिंग. इंडोर में तो खैर नहीं अगर आउटडोर का वेदर खराब हो जाए. वेन्यू परमिटिंग. वेन्यू ना मिला तो फिर ज़्यादा मसला है. राइट. और जो कि नहीं मिलना, वी ऑलरेडी नो कि इट्स ऑल बुक टिल अक्टूबर. सही. तो अगर आप टूर्नामेंट करवा रहे हो, आपने टीम से एंट्री फीस ली हुई है, तो यू कैंट से कि मैं कॉर्नर स्टोन वाला ग्राउंड जाके उधर सुबह 8 बजे बैठ जाऊंगा एंड विल सी कि हम करवा सकते हैं, यहाँ पे नहीं करवा सकते. तो क्योंकि उधर भी पीपल दैट प्ले फ्रॉम दैट कम्युनिटी, they show up an hour later and with 10-20 people and then they're like, okay, we want to play here. Last time we tried to play there and they showed up. We had a guy with a bag there and then the other team was like, you guys didn't put the stumps up, so you can't play. अच्छा. Or like, we had a guy here 15 minutes before you guys showed up, so obviously we want to play here. He's like, but you guys didn't put the stumps. So that's the rules. I'm like, who made those rules? आईसीसी का आप कौन इस सा तरह करें सेक्शन ना, इस साल क्या करें, आप 180 बंदा ले जाएं उधर सीईसी का, तो उधर जाके ना पिच पे लेट जाएं एक रात पहले. यही हाल रह गया. एक रात पहले यही हाल रह गया. तो बोले जैसे वैसे भी आप करते हैं अपना 3 AM सेशंस, तो उस दिन सो जाए उधर ही. ठीक है. उसका एक और हल भी है मेरे ज़हन में, बट दैट्स इलीगल. I'll tell you off camera. नहीं इलीगल एक्टिविटीज नहीं. एक्टिविटीज इलीगल नहीं है, लेकिन वो तरीका इलीगल है. बैडमिंटन में भी अच्छी क्रिकेट हो रही है. टेप बॉल का सीन मुझे उधर नहीं पता. आई नो दे डू वो डोम उनका बड़ा जबरदस्त है, उसके अंदर कॉस्मोस वाला. दे डू अ गुड टूर्नामेंट. राइट. तो they recently did it actually. Ontario से भी कुछ प्लेयर्स आए थे. I think Rizwan Chima was there. Yusuf from Edmonton was the captain, I believe. और उसमें पिछले इस साल तो आई डोंट थिंक कैलगरी की टीम जीती है, बट लास्ट ईयर एंड ईयर बिफोर इट वाज कैलगरी टेबल टीम दैट वन एंड दोज प्लेयर्स प्लेड इन WCL. तो विंटर क्रिकेट लीग. या सो वी विल डू दैट आल्सो इंशाल्लाह. उसको हम उसको बड़ा कर लें टू अकोमोडेट मोर टीम्स, वो टू बी सीन. End of the day, challenges will be there, but we wish you all the best. Thank you so much. With everything. And with that, we just want to thank you for watching Crick Chat powered by Umar Sheikh, and also Kinetic Sports for sponsoring the show.